sir. So volume, we've assumed that ammonia comes until X, no, sir? Correct. And the rest part will be HCl. Correct. So I can write this as RNH3 by RHCl will be equal to under root of molar mass of HCl by molar mass of ammonia, because this is at constant temperature and pressure. Those factors won't come. R stands for the rate, no? Rate. So if I divide these two, this A will get cancelled, T will get cancelled. I would end up having x by 100 minus x is equal to under root of molar mass of this is around 70. Sorry, HCl is 35.5, 36.5 divided by 70. Working this, we will get x close to 60. Around 66, I guess. Yeah, 66. Yes. 66 centimeters. I hope you understood that bit. Sir, so here you wrote rate as volume upon time, no? Right. And volume we wrote as area of cross section into the length. Correct. And sir, after that, took the ratio. So A and T will get cancelled. Correct. And rate is nothing but under root of the molecular weight of Ratio of their HCl. molar mass. Correct. Yes, sir. Got it? Yes, sir. So this technique will be used in these type of questions. So this is the same, the first one that we did. Yeah, benches wala. Yes. Now, the other application of gaseous state is an open container. Okay. Open container as in when you have a container which has some gas in it and it is maintained at maybe Pi pressure having V volume, number of moles Ni, and temperature is maintained at Ti, let's say, is maintained at Ti. And on heating of this container, if at all I heat, then what will I expect is that temperature will change here for the gas because you are heating. Number of moles will change because some of the gas will escape out of it. Okay. So we may not have a particular boundary here which is not closed, but I can visualize a virtual boundary here. Say this is that virtual boundary. But inside the container there is gas now or liquid? Gas. You are only talking about gases. Yes. So I can think of a virtual boundary here which will make a certain volume. And in that virtual boundary, I'll have number of moles initially Ni, temperature maintained at Ti, pressure Pi. Next. Now if you see that number of moles originally, if you consider they were Ni, but on heating some of the moles will escape out and the new number of moles will be formed. I'll call it as N final. This I'll call it as T final, but the pressure and volume remains same, which is Vi and V. Why? Pi and V. Reason is when you increase the number of when you increase the temperature here, to compensate this pressure only some of the gas has been left. Open container will always have constant pressure. So pressure by volume ratio, pressure and volume individually they are constant. Yes, they are individually constant. Okay. So how but if we increase? See, this is the visual bound. This is the hypothetical boundary which I'm assuming. Same boundary I'm keeping. So volume is constant, na? Yes, sir. Only that is expanded, not the gas. Right. The gas while expanded, some of the moles have been lost. Imagine. Obviously, that will happen. Na? Yes. Okay. Then whatever the remaining number of moles and the new temperature which it has attained will be such that the pressure will remain constant. Understood? Because it is open container, right? So whatever the outside pressure is, it will always try to inflate that. Increase in temperature, pressure won't change, sir. It will change considering number of moles remain constant. But if number of moles are changing, then pressure won't change. Only number of moles will change. Oh, okay, sir. So because the number of moles are allowed to escape, so the pressure is remaining constant. Correct. Yes. So I could use this
PV is equal to nRT, which is constant because pressure and temperature, pressure and volume, both of them are constant. So I can write it as Ni into Ti will be equal to Nf into Tf. Is it making Yeah, sir. sense? Yeah. So from here, number of moles final will be equal to initial by T final. Okay, beta. This is something which we'll be using in open case containers, open container cases. Okay. So this is only valid for open container, Open no? containers, NITI. only open containers. Yes. See the question here. Find the fraction of gas escaped when gas is heated from 27 degrees centigrade to 227 degrees centigrade in an open vessel. So since it is an open vessel, I can assume pressure and volume are constant. And I can write Ni Ti initial will be equal to N final and T final. So N final will be equal to initial, let I call it as Ni. T initial was 300 kelvins So we have to divided by convert it into Kelvin so we can keep it in Celsius. always kelvins beta, because PV is equal to nRT is only valid with kelvins temperature, not with degree centigrade. Okay. Okay. So that gives us 3 by 5 times of Ni. So can I say that the difference in the number of moles will be Ni minus Nf, which is 2 by 5 Ni. Yeah, sir. So the fraction of, you can write this as fraction of number of moles, fraction of gas escaped will be how much? This is the gas which was remaining. This is the gas which was escaped. So 2 by 5 times of Ni divided by Ni. So it is 2 by 5 times. Is this clear? If I ask percentage of gas that has escaped, then into 100. So 40%. Sir, but the fraction of gas that is escaped, the formula for that will be the change in the initial to final divided by the initial, no? That is what we have done. No? Change divided by Ha, initial. yes, yes, sir, yes, sir. Okay, beta. Yes. So this is the another JEE mains type of question which is usually asked where open container has been taken. So I think this application you should be able to do. Clear, beta? Yes. Next. Another application which you will see here, right, is about uh, vapor pressure and aqueous tension. Already we have seen one important case about Dalton's, you know, Dalton's partial pressure, Dalton's law of partial pressures. Now, here, if there are gases present along with water in it, which means, just for instance, first let us understand these terms. Let's say I have water at certain temperature, some ambient temperature, so T degrees centigrade. At this ambient temperature, it is evaporating. What is evaporation? The phenomena of the surface particles of water molecules in its liquid state to convert into vapor state. Yeah, yes. This is evaporation. Condensation is the phenomena of vapor Gaseous state, to liquid. gaseous state particles of water to convert into liquid state. Correct, beta? Yeah, sir. Now, when you keep this vessel open, you can see evaporation also happening. Some condensation will also take place. But if you keep the container closed, there would come a certain point where the rate of evaporation and rate of condensation will become equal. Do you agree? Sir, in the open container, whatever gets evaporated, that only will get condensed again, no? This one, no? Right? For Not no, necessary, no, sir. beta. So the Not necessary, no? Like, for the closed one. for the closed one, yes. Because in closed one, there is nothing else. Okay. Yes, sir. Yeah. So whatever the rate, whatever the gas or vapors that are evaporated, that will condense back. So I can say that at equilibrium, at equilibrium, rate of condensation will be equal to rate of evaporation.
So when condensation and evaporation rate is same, can I assume that the pressure developed here will become constant? Huh? Because Yes, sir. number of particles, those vapor particles have become constant ना, वो change ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ जितना आ सर. रहा है उतना अंदर जा रहा है, तो जो बचे हुए वो वैसे ही है. हाँ सर. I can write this equation as this way: H2O liquid is in equilibrium. This sign represents that it is happening on both sides. Okay, beta, Yes, sir. right? And I can draw something called an equilibrium constant. Slowly you will get to learn. Equilibrium constant is a certain constant which depends upon the partial pressures or concentrations. Here it is about gas, which means I am more interested in its pressure. So this P equilibrium, which I can also write it as Kp, as pressure given by H2O at that constant temperature, at that same temperature. This pressure which has been constant pressure which has been seen is called as saturated vapor pressure. Saturated vapor pressure. Okay. Now suppose if at हाँ. all I take a water bottle, this has water in it, I'll Yes. keep it open like this, right? Even suppose if there is a lid that closes this, in this gap, wherever the gap is there, the space, there we will have vapor, water vapor, and that pressure will be constant So at this inside particular the bottle temperature. only it will evaporate and condense, no? Condense. So over there we can say that the pressure remains Constant. constant. Perfect. And that constant pressure is called saturated vapor pressure. Okay, okay. Got it? Yes. Now, even if I take this water and put it to the cap, okay, small cap, got it? Yes, sir. Now if at all I close this, ठीक है बेटा, हाँ सर. यहाँ पे क्लोज करके मैंने मेजरमेंट लिया है, यहाँ पे क्लोज करके भी, क्योंकि यहाँ पे भी गैप है, हाँ. so I'll take measurement of pressure here. I'll find it exactly same pressure. Sir, why? How? Because water vapor depends only on one factor, and that is temperature. It do Oh, not depends upon how much amount of quantity you are taking. Are you getting it? By definition, oh, okay. understand this. Yes, What sir. is vapor pressure? It is the amount of pressure that is applied on the surface of water when it is under equilibrium. Are you getting it? Asha, vapor to any gas will apply same pressure here, here, here as well as here. Do you agree that? है ना? Yeah, sir. So same thing is happening here also. The amount of pressure that is applied on the surface of the liquid is what we call it as vapor pressure. ठीक है? Sir, तो And sides पे भी same ही pressure apply होगा ना? साइड में Like भी सेम ही होगा all. बेटा, मैं हाँ. इसको डेफिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ. ये वाटर के रेस्पेक्ट में बताना है. अब देखो, सपोज यहाँ पर इसको मैंने 2 हाफ्स में काट दिया, तो क्या यहाँ का प्रेशर डिफरेंट रहेगा क्या? नहीं. क्योंकि वॉल्यूम भी उतने अमाउंट में कम हो गया ना. हाँ सर. तो इसके लिए क्या ये डिपेंड करेगा कि मैंने कितना क्वांटिटी लिया? नहीं सर. नहीं. तो इसके लिए आप चाहे बॉटल में लो, ग्लास में लो, मग में लो, बकेट में लो, ठीक है? पर सर यहाँ पे तो हम लोग ने इक्वल किया ना. इन केस ऑफ बॉटल एंड कैप तो इक्वल डिवाइड नहीं था, तो दोनों का प्रेशर सेम कैसे हुआ? कैसे नहीं हुआ? देखो, अगर मैंने ये बॉटल लिया, ठीक है, सपोज ये बॉटल का सरफेस है, इतना ज्यादा है बॉटल का सरफेस, करेक्ट बेटा? हाँ सर. ठीक है. अभी एक स्मॉल कैप का इतना ही है, राइट? हाँ. बाकी सब वाटर है, ये पूरा वाटर है, ठीक है. अब देखो, ये क्वांटिटी यहाँ पे ये बॉटल का साइज का इतना मैं कट कट कर देता हूँ. दिस इज दैट बॉटल का साइज. अभी ये वाला पार्ट पूरा बॉटल का साइज, ठीक है? गॉट इट? यस. तो इतने वॉल्यूम का जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, दैट वुड बी सिग्निफिकेंट टू इतने वॉल्यूम का जितना प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है.
Oh, okay, like that. अच्छा ये सोचो, नंबर ऑफ मोल्स तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना, हाँ सर. और टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ. तो अगर वॉल्यूम हाफ में बटेगा तो प्रेशर भी तो हाफ में बटेगा ना. हाँ सर. तो क्या प्रेशर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं. नहीं करेगा. समझ में आया? हाँ सर, तो मतलब कि अगर भी बॉटल कैप ले तो बॉटल कैप का जो एरिया है वो भी छोटा हुआ ना, तो प्रेशर फॉर द फुल बॉटल इट हैज अ लार्जर एरिया आल्सो. यस. और छोटे बॉटल पे थोड़े मतलब इट इज एक्चुअली सेम अगर रेशियो देखे तो. करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट. ये पॉइंट समझ में हाँ आया. सर. बहुत इंपॉर्टेंट हाँ. पॉइंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट सेकेंड ईयर में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है. Yes. सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. हाँ सर. अब इसे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है. देखो, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सब्सटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ amount of volatile substance taken, shape, size of the container in which it is kept. Got it, beta? Right? Yes. Now assume this time what I am saying, I have a container which has some water in it. यहाँ तक water है. Okay, so this much is the water amount, and we would, because of water, there would be certain water vapor at this temperature, at certain temperature. Let's say these are some vapors. Got it? But it is like यहाँ पे एक atmosphere भी है. Okay, so which means there are other gases also. Let's say there are other gases like A, B, C. So these are all gases. These are all gas particles. Yes sir. So like that I have A, B, C gases. So can you tell me what would be the total pressure exerted in this particular region? The total pressure would be Pressure exerted by all A, B, C का addition ना. B, C as well as pressure because of water also ना. हाँ और सर. इसी को हम लोग सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं. सर प्रेशर बिकॉज ऑफ वाटर उसी के कारण होगा ना, बिकॉज उसमें से कुछ इवेपोरेट होगा. Correct, perfect. So हाँ सर. pressure because of water which evaporates, that is called as aqueous tension. It's called aqueous tension. Is this point clear, beta? यस सर. Okay. अभी हमने बताया यहाँ पे क्या गैस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा क्या टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है समझ में बहुत. ओके, हाँ. राइट. सो इस टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज aqueous tension. NCERT uses the word AT, which means aqueous tension. Okay, so the total pressure will be equal to pressure because of all the gases ना, इसको मैं बोलता हूँ dry gas pressure. Sum of all the gases I will call it as dry gas pressure plus Yes. AT. I guess you understood this. यस. Right. So this is how we measure the total pressure. हाँ Now सर. one thing you can understand that dry gas pressure के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि द वेपर्स which are coming from water will have a different property as compared to the partial pressure of the gases. All the gases will have different property, and pressure coming from water will have different property. Is it making sense? हाँ सर. यस. Right. सर all So different gases also will have same property only. हाँ, they will have same property ना, आइडियल गैस की तरह मान रहा हूँ. हाँ सर. PAVA is equal to NART. This is valid. Same way PBVB is equal to NART. This is valid. वॉल्यूम तो सेम है, इसके लिए मैं वॉल्यूम को V लेता हूँ, ठीक है. हाँ सर. तो here I can apply सर that NB रहेगा ना, NDRT. NB, yeah, NB. Yes. So here I can apply the fact that PA is equal to, right, sorry, uh, mole PA is equal to, right, dry gas pressure multiplied by mole fraction of A. अब समझ में आया Dalton's law. So Dalton's law can be applied, but only for dry gases, not for the total pressure. हाँ Similar, सर. PB can be written as
P dry gas. So that is This one, mole fraction. pressure of dry gas into the mole fraction of That respective sir. gas. हाँ. Yes, sir. But how come like this from the previous law, na? हाँ. Dalton's law हमने पढ़ा ना. हाँ Sum sir. of the total pressures will be equal to partial pressures is equal to total pressure, and partial pressure can be written as mole fraction multiplied by total pressure. हाँ सर, तो वो सिर्फ ड्राई गैस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना सर, नॉट फॉर इन द केस ऑफ वाटर एक्वस टेंशन के लिए नहीं ना? नहीं. राइट. अब देखो, यूजुअली if you consider a situation, got it? If you consider a situation around, suppose if I'm, ऐसे इसको अलग से बताता हूँ. चलो, suppose if I'm standing near the sea, okay, I'm standing near the sea, or if I'm standing, you know, on a hill somewhere, यहाँ पे कोई हिली एरिया है, वहां पर मैं हूँ. ठीक है बेटा? हाँ सर. ठीक है. देखो यहाँ पे पानी नहीं है, आसपास में ज्यादा पानी नहीं है. So which place do you feel more humidity? You may have heard the word humidity. Yes sir. So which place do you feel more फर्स्ट केस humidity? पे. First case. First case है ना? हाँ सर. Got it. So what is this humidity, all about? See, basically what happened here. यहाँ पे जब मैं assume कर रहा था ना, अच्छे से सुनो बेटा, ये यहाँ पे गैसेस के बारे में जब मैं assume कर रहा था, I was assuming कि ये गैसेस ना वाटर में मिक्स नहीं हो रहे हैं. Got it? बट क्या ये सच है? गैसेस वाटर में मिक्स होते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज एक्वाटिक लाइफ बीइंग क्योंकि ऑक्सीजन है पानी के अंदर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन है, करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गैसेस मिक्स्ड है उसमें, है ना? व्हेन गैसेस आर मिक्स्ड, राइट, देन वो गैसेस भी थोड़े सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं ना बेटा. हाँ सर. तो तभी the water evaporated would become less ना. हाँ. यस सर. एक ऐसा इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट पे मैं फिर से एक बार रेस करता हूं कि सपोज यही इक्विलिब्रियम के बारे में फिर से हम लोग बात करें, तो इस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम में इश्यू क्या है कि यहाँ पर थोड़े से ये जो गैस पार्टिकल्स है उन्होंने भी थोड़ा कवर कर लिया है कि वो भी थोड़े सॉल्यूशन वाटर में मिक्स हो गए और सरफेस पे थोड़ा ऑक्यूपाई कर लिया. तो इससे जो आइडियली हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, सपोज इसको मैं आइडियल कंडीशन में एक्सपेक्ट करता हूं, राइट, आइडियली विदाउट एनी गैस, यहां पर अगर कोई भी रेड वाला पार्ट नहीं है, इमेजिन, करेक्ट? हाँ सर. तो यहां पे जो प्रेशर आता है ना, दैट फॉर वाटर लेट मी कॉल इट एज P0H2O. ठीक है सर, विदाउट एनी गैस ना? हाँ, विदाउट एनी गैस. हाँ सर. अब ये गैसेस में साथ में है तो यहाँ पर PH2O लिखता हूँ. क्या मैं बताओ, क्या क्या ये बताओ, दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर आएगा, टेम्परेचर सेम है. क्या दोनों में प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सर डिफरेंट रहेगा ना, गैस भी तो थोड़ा प्रेशर लगा. नो नो नो, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ वाटर हियर. नहीं सर, अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिफरेंट रहेगा. ये जो मैंने केस पहले एज्यूम किया था ना, करेक्ट, जो सेम रहेगा वो तब लिया था तब दोनों में कोई यहाँ पर दोनों ही मिक्सिंग नहीं प्योर होता ना वाटर सर. हो. हाँ, जब ओनली प्योर वाटर हो तो वैलिड है वो स्टेटमेंट. समझ में आया? अभी हाँ ये सर. प्योर वाटर नहीं है, इसमें थोड़ा मिक्स्ड ऑफ अदर गैसेस है, और हाँ सर. यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा तो उसका सरफेस पे बाकी गैस पार्टिकल्स भी आ चुके हैं. हाँ. ये बेटा, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है. समझ में आया? करेक्ट, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर मिलेगा वाटर से जितना कि यहाँ पे मिल रहा है.
आर यू सर गेटिंग? तो प्रेशर वाटर के वजह से जो प्रेशर वाटर की वजह से जो सर वाटर के वजह से जो प्रेशर है वो सेकंड केस में कम रहेगा। परफेक्ट, सेकंड केस में कम रहेगा। ये पॉइंट हाँ समझ में आया? हाँ ओके। सर समझा। बट मैंने जो डिफाइन किया ना, एक्वस टेंशन में इसको डिफाइन किया हूं, क्योंकि मैं एक्वस टेंशन हमेशा प्योर एज्यूम करके ही कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्वस टेंशन मतलब वो प्रेशर ऑफ द वाटर सेम रहे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। करेक्ट। सर तो पर ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि मतलब पूरा ही गैस मिक्स ही ना हो वाटर के साथ, होगा ना मिक्स तो। कम अगेन बेटा, क्या बोला? सर ऐसे पॉसिबल है क्या कि इट विल नॉट एट ऑल मिक्स विद वाटर, इट विल मिक्स ना? हाँ, इसमें ना, सर फर्स्ट केस जो है जिसमें इसमें तो मिक्स नहीं इसमें होता है। गैस ही नहीं है, इसमें गैस ही नहीं है, लिया ही नहीं तो मिक्स कैसे होगा? हाँ सर, इसके पहले हमने जो लर्न किया ना, प्रेशर ऑफ ड्राई हाँ, प्लस। ये तो आइडियल केस है बेटा। हमने ये एज्यूम किया कि आइडियली चलो अगर मिक्स नहीं होता है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। हाँ सर ओके, तो आइडियल है ना, ऐसा हाँ, होता तो आइडियल, नहीं। ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, हाँ वैसे तो आइडियल गैस भी तो एग्जिस्ट नहीं करता है। करेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, बट रियलिस्टिक में ये सिचुएशन होता है, बराबर। तो this can be used as a one of the measurement of how much water vapor is existing. That is called as relative humidity. Relative humidity, which is represented as RH, is the pressure exerted by H2O in atmosphere, which means इसमें हम लोग ये assume कर रहे हैं कि ये जो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं उस टाइम पे उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। करेक्ट, उस टाइम पे जो मेजरमेंट है डिवाइडेड बाय P naught of H2O. ओके, गॉट इट। इसमें क्या सर। एज्यूम कर रहा हूं मैं? इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कोई भी नहीं है गैसेस, सिर्फ वाटर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना बेटा, P of H2O in atmospheres divided by P divided by aqueous tension। ये लिख सकता हूं। ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन फ्रैक्शन। और परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा मैंने, परसेंटेज ह्यूमिडिटी पूछा मैंने। करेक्ट, तो कितना होगा बेटा? PH2 by PH2 80, upon 80 into 100. Correct. हाँ सर। Humid. Mumbai is one of the very humid places. Minimum वहाँ पे 70 to 80% एटमॉस प्रेशर होता है, वाटर वेपर होता है वहाँ। करेक्ट, स्वेट बहुत ज्यादा करते हैं मुंबई में। राइट, करेक्ट, क्योंकि कम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर भी है, 20-30 डिग्रीज भी है। करेक्ट, तो हाँ काफी सर। ज्यादा वाटर वेपर आ जाता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। यस। But now if you come to Hyderabad here, correct, or if you go towards Chennai, not in Chennai, okay, Chennai में दोनों cases है actually, extreme हो गया। हाँ Right? सर। So if you go to Delhi for instance, ठीक है, यस। so it's a very dry place. Kota is one of the dry places, got it? Rajasthan, very dry place, वहाँ पे humidity होता ही नहीं है, got it? Sunstroke ज्यादा लगता है। Are you getting the feeling, right? Right? सर पर दैट प्लेस इज वेरी, और वहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ना, तो ह्यूमिडिटी और नहीं रहना चाहिए क्या? पानी नहीं है ना। अच्छा। ह्यूमिडिटी नहीं तो होने के लिए अगर पानी भी सर, तो अगर चाहिए, उधर पानी रहता तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाता था बहुत ना। ज्यादा ह्यूमिड होता। करेक्ट। हाँ सर। ऑलवेज कन्वर्स सोचो, क्योंकि क्योंकि वहां पर पानी नहीं है, इसके लिए वहां पर गर्मी ज्यादा है। okay? हाँ हाँ सर। क्योंकि ये पूरा वाटर वेपर फिर से ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर से नीचे आ रहा है। राइट, यस। और वो पानी उधर ही ज्यादा आएगा जहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो। तो जहां पे हाँ। ह्यूमिड ज्यादा होगा वहां पे प्रेसिपिटेशन भी जल्दी होगा। यस सर। तो किधर प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज्यादा है? मुंबई में प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा, हाँ इसके सर। लिए मुंबई की बारिश बहुत ज्यादा होता है। हाँ करेक्ट, सर, अभी भी हो रही है। हाँ ना। ओके, हाँ। यहाँ से शिफ्ट कर दिया मैंने। We had enough in Hyderabad now. We've been flooded enough. Okay, you got the point now, right? यस सर। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, हाँ सर। राइट।
Next, see, simple question that was this was asked in JEE. At initial pressure of water is 293 centimeters of Hg. Then find the pressure of ideal gas after removing the stop clock. इस तरफ वैक्यूम है, यहां पर ये 4 लीटर्स कंटेनर है, 298 केल्विन पे दोनों तरफ मेंटेन कर रहा हूं मैं. Aqueous tension of water is 25. Okay, this is initial pressure above water. मतलब यहां पर पूरा प्रेशर कितना था इनिशियली, टोटल प्रेशर कितना था, 293 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg था. कैन यू डू दिस बेटा? सर इनिशियल प्रेशर इन द फर्स्ट केस था, तभी स्टॉप कॉक लगाया था क्लोज ना था. सर? हाँ क्लोज था. हाँ सर. ट्राई करो.